कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन और क्या क्या Isn't brass a mixture? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कभी बदल नहीं सकते। और फिर कुछ ने सोचा कि नहीं, इसको बदला जा सकता है, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की। तो देखो जैसा कि ये ना, ये दिस इज आयरन एंड देयर इज आल्सो ब्रास एंड देयर इज कॉपर एंड which is the heaviest of elements that you see? Mendelevium? No, in your daily life, which is Tungsten. no, no, no. Oxygen is very light. Lead, Oh yeah, lead. but No, there's very little lead in that. That's mostly carbon. water is a compound. So now, Those are compounds, not elements. excuse me, sir. Waves. इधर क्लास हो रही। Cement. ठीक है, Cement is ऐसे करते हैं, उधर चादर डाल देते हैं उनके ऊपर, वो चुप हो जाएंगे। नो टॉकिंग। अच्छा, तो विच इज द मोस्ट प्रेशियस मेटल दैट देयर इज? गोल्ड, carbon. platinum, Carbon. Amethyst. silver. Amethyst. Carbon. Silver, देखो, you know, Diamond. well, diamond is not an element. I It's asked a for carbon. an, It's just carbon. Golden. but it's okay. So, that's also true, but uranium wasn't Tungsten. discovered in. Tungsten. So, for a long time, people used to try and convert what were called the base metals, base meaning के जो ordinary किस्म के metals हैं, into these very rare metals like silver, gold, platinum. And there was a whole bunch of people working for hundreds of years. And they were called alchemists. So chemistry began from alchemy. They didn't succeed, but they invented a lot of methods. Achha, then comes hundreds of years later, a scientist who you're going to meet today. Me? And yeah, meet, I mean. He's going to come. No. See, rather. I may not be able to talk very long, so you'll have to keep quiet. Okay, so she discovered something that was absolutely staggering. Stunning. And that is something that you're going to see now, and then you're going to make notes of this. If you two don't want to come here, you can go out. If you don't want to come here, you can go out. Acha. So you're going to see this movie, and what I want you to do is make notes to yourself. I'm going to ask each one of you to make some comments on what you liked the most, what you disliked, and I'm going to ask you to come and speak, because I can't speak today. You see, I can't speak today. So you are going to comment on the movie. I'm going to make a few comments also. And let's see then what you have to say on this movie. Okay, so start the movie. Marie Curie, discovering radioactivity. And I'm going to ask at random who saw what and liked what and didn't like something or didn't understand something or understood something and needs to explain it to others. So let us start with you.
And can कोई माइक है? हाँ, कुछ भी बताओ. What did you understand from this movie? Tell us something about it. Speak into this. You don't know? Okay. That radioactivity is very dangerous and it can damage your health and maybe you will die. Okay. So that's an important aspect. So you see, radioactivity is something that comes out of atoms, out of certain atoms. सारे atoms नहीं, लेकिन कुछ atoms में से ये rays निकलती हैं और वो 3 तरह की होती हैं, लेकिन चलो जो भी rays निकलती हैं, that's called radioactivity. अच्छा, अब radioactivity के फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी हैं. और मैरी क्यूरी जो इतने अरसे तक ये काम करती रही ना रेडियम के साथ और पोलोनियम और यूरेनियम, तो इन सारों में से रेडियोएक्टिविटी निकलती थी. एंड शी डिडंट नो इट, बट इट वाज वेरी वेरी डेंजरस. तो आजकल देखो, तुम लोगों का तो अब तक एक्सरे नहीं हुआ होगा ना? किसी का हुआ है? ओह, अरे इतने लोगों का एक्सरे हुआ? तुम्हारा हुआ है? अच्छा, तो तुम लोगों को एक्सरे जो है वो सिर्फ इतनी देर के लिए दिया जाता है. यू नो, एक डार्क रूम होता है और जो टेक्नीशियन है वो अपने सामने एक लेड प्लेट लगाता है ऐसे, और वो कहता है कि तुम उधर खड़े हो और फिर इतनी देर के लिए एक्सरे लिया जाता. अब मैरी क्यूरी जो है वो तो घंटों क्या, दिनों क्या, हफ्तों क्या, सालों तक काम करती रही रेडियो एक्टिविटी के साथ, और उसको ये नहीं पता था कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है. और ये बात जो तुमने अभी बताई ना कि इट्स डेंजरस, यस इट इज़ डेंजरस. ओके, नेक्स्ट कमेंट. हु वुड लाइक टू कमेंट? तुम कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ बोल. अच्छा, चलो. हाँ, इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट उसने गिव अप नहीं किया. उसने इसके लिए काम किया और फिर आखिरकार वो पेरिस के यूरो जाके वहाँ पे पढ़ी. और जब उसके शोहर की डेथ हुई तब भी वो बहुत दुखी थी, लेकिन फिर भी उसने इसे नहीं छोड़ा और उसने इस काम को जारी रखा. वंडरफुल वंडरफुल. ये बहुत ही अच्छी बात की तुमने कि सॉरी, ये मेरा नहीं है मेरा तो ये कि उसने बहुत साबित कदमी के साथ, बहुत हिम्मत के साथ काम ली. अच्छा, ये देखो कि उसको यूनिवर्सिटी में दाखला तो नहीं मिल सकता था. अच्छा, ये पहली बार है कि किसी लड़की को दाखला दिया गया सोरबोन में, और पहली बार है कि एक लड़की ने वहाँ से ग्रेजुएट किया. देखो, आजकल तो ना लड़कियाँ जाती हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज भी, स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती है, यूनिवर्सिटी भी जाती है, लेकिन उस ज़माने में यूरोप में ऐसे नहीं था. उधर औरतों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी. They fought for it, and then some of them managed to get into universities, and the Sorbonne is France's best university, absolutely the best. जैसे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज है ना, so it's like that. Yeah, Oxford, Cambridge, and she didn't have money. So how was she able to get through? ये बताओ. हाँ, Barina made money for it. what? हाँ, क्या? She didn't have money, so how did she afford? Her sister made money for it. Good. What was her sister's name? Barina. Bronia. Bronia. Yes. Bronia. So yeah, tell me what happened. How did Bronia help her sister? She became a doctor and started to make money for Marie, whatever.
Marie Curie's education. Yeah. But before she became a doctor, what did she do? Studied. Yeah. She was a tutor. Something else also. Yeah. She also worked in the government. She was a She also worked in the government, a governess. She worked as a governess, Marie Curie, governess. for her sisters. हाँ. अच्छा governess और governor में क्या फर्क होता है? Governor is male, governess is female. Male and female. Oh. Governess is a female and governor is a male. नहीं. Yeah. Wait. I don't want to give you this all. I'll give it to you. What's the difference between a governor and a governess? Governess discusses politics. बोलो. A governess is हाँ. जल्दी से बताओ. a governor is male and governess. No. You. What's the? हाँ. Okay. A governess is a woman, and she's also one of the first women. नहीं. Just kidding. Ha. यार सच्ची बात बताओ अब. हाँ. She's So a governess is a woman who looks after children. तो हाँ, जैसा कि हम क्या कहते हैं उर्दू में गवर्नेंस को, जो घरों में आया. अच्छा, तो गवर्नेंस आया होती है. गवर्नर जो है वो तो एक पूरे मुल्क या पूरे सूबे की रखवाली करता है. उस पर उसके इंतज़ामी उमूर की जिम्मेदारी उस पर होती है. सो बिग डिफरेंस. अच्छा, व्हाट एल्स अबाउट द मूवी इम्प्रेस्ड यू, और व्हाट डिड यू टेक फ्रॉम इट? आ जाओ. The movie also taught us that Marie Curie was very hard working because in World War I she created the first X-ray machine which helped to treat World War I soldiers. That wasn't That was wasn't Little Curie. Marie Curie ने किया था. It was called Little Curie after Marie Curie. Technically उसने किया था. नो. ये बिल्कुल ठीक कह रहा है. देखो, She did. Marie Curie discovered radium, polonium, and she saw how radioactivity could be used, and so she to see inside the body, है ना. तो ये देखना कि किसी सोल्जर की हड्डी टूटी है या कहीं पर कोई डिसलोकेशन हुआ है, मतलब ये अपनी जगह से अगर कोई हड्डी हट जाए ना तो उसको डिसलोकेशन कहते हैं. तो उसने फिर ये छोटे एक्सरे मशीन्स बनाए. तो जैसा कि तुमने देखा ना, ये मशीनें जगह जगह उधर बैटल ग्राउंड पर पहुंचाई जाती थी, और मैरी क्यूरी एक्चुअली डिजाइन दोस. एंड दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, किसी को पता? 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म. करेक्ट, बिल्कुल सही. अच्छा, तो एक्सरे मशीन देखो, तुम लोगों ने एक्सरे अपना किया हुआ होता ना, तो व्हाट इज द मशीन दैट इज क्रिएटिंग द एक्सरेज? There's somehow those X-rays are being created. MRI, X-ray. So in the X-ray machines, X-ray machines में क्या होता? You have electrons which come zoom and they hit a metal and then out come X-rays. तो वो उस ज़माने में उधर नहीं होता था. So what Marie Curie did was she used radium and polonium. These are the two elements that she had discovered.
So they were used as sources of the X-rays. Wasn't that dangerous? Just like अब यही तो बात है कि it's also dangerous, और उस ज़माने में पता नहीं था कि actually nurses use them on American soldiers. They were used on American soldiers. That's dangerous for both. It's extremely. They had to use. They had to wear them. so yeah. Who found out? Who found out the radioactivity is dangerous? That's a very good question. Who found out that radioactivity is dangerous? अच्छा, तो ऐसे हुआ. It didn't happen all of a sudden. लेकिन देखो जो यूरेनियम मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने दरियाफ्त किया ना, वो माइंस में से निकाला जाता है. तो जो माइनर्स हैं जो जाकर अंदर, तो यूरेनियम अलग तो नहीं मिलता है, इट कम्स एज पार्ट ऑफ कोयले के साथ. तो निकालते निकालते उनका काफ़ी एक्सपोजर हो जाता है, और उसकी वजह से, अच्छा उस वक्त तो नहीं पता चलता था कि ये माइनर्स जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में क्यों मर जाते हैं. नॉर्मली तो लोग ना उस ज़माने में 50-60 साल तक ज़िंदा रहते, लेकिन इनको कैंसर हो जाता था कोई 40-45 साल की उम्र में. तो कम उम्री में वो कैंसर का शिकार होते थे और फिर मर जाते हैं. Nobody really understood why this happened, but then slowly, so if your question is who discovered it, basically it's the miners and the doctors who were looking after the miners. अच्छा, अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये चीज़ आज भी पाकिस्तान में हो रही है. There are miners who dig out uranium from the ground. पता है यूरेनियम किस लिए, पता है यूरेनियम किसके लिए इस्तेमाल होता? X-rays. नो. हाँ. When they didn't know uranium was dangerous, they sometimes also नज़दीक करके बोलो. they used it to make luminous watches. They put Jewelry too. uranium There were in in fact the a variety watches. of poisonous colors at that time. Wallpaper too. I'll show it to you. नहीं. I'll tell you what uranium is used for today. So you are absolutely correct. Uranium is something that can break into two or break into many nuclei, many elements. तो जब ये टूटता है तो इसमें से बहुत ज़्यादा ताकत निकलती है. And so you can use that for two things. One is building a bomb, and that's the first thing that it was used for. The other thing is that you can use it for generating electricity. You know where this electricity comes from? How much yours is produced? How much comes from a dam produced? How much is it? So this electricity Comes from dams. comes from some kind of a power plant. The power plant can use either oil or coal or water or uranium. There's one nearby in Chashma. It's like a 2-hour drive from Yeah, here. yeah. So anyway, मैं तुम्हें ये बता रहा था ना कि आजकल भी पाकिस्तान में ऐसे होता है कि माइनर्स ये यूरेनियम खोद खोद के निकालते हैं इन माइंस में से, और उसके नतीजे में उनको कैंसर हो जाता, लेकिन उनको बताया नहीं जाता. Why? It's So they can keep working. because otherwise they won't work over there. It's that is, capitalism. you're absolutely right, it is cheating. It's capitalism. It's something that's wrong, but it happens. Why can't they use So you see, because you are educated, or your educated kids, you know that,
and you would not work in a uranium mine. But they have to. Now I need somebody else. I want to ask her Huh. two things. No, not ask, but give us a summary. Okay. So Marie Curie's life was filled with challenges. She overcome them from beginning, and in the beginning she was taught to love science, and she loved it. It really shows how a scientist's compassion for subject really drives everything. So whatever you do it with passion. If you're not doing it with passion, find something else you might like to do with passion. That is how you find a career in whatever you like. Wonderful. And excel it. Okay. Tell us something else. Like. So the idea that women should not go to universities or to colleges and that women are inferior. What do you think about that? It really stems from pride. So when people who are in power, they want to keep their power, they often do unjust things for it. So men, in order to keep their positions and not compete with women, even though they knew they were the same level of them, they kept them inferior. This is always how it happened. It's still happening. It will always continue to happen. You have to always fight against it and see where it is. First spot it, then fight against it. क्या बात है, क्या बात. So, let's give him a hand. Yes, yeah. Okay, so why do you think that boys are better than girls or girls are better than boys? First of all, let's have a vote on this. I never think that. Who says girls are better than boys? I think both are good. Who says boys are better than girls? Not me. This is a lie. Both are equal. Oh, wait. Yes, what did you say? This is a lie. Both are equal. Yeah, but why? Why do you say that? They're both powerful. Okay. So I want you to give me an argument which says the same thing. Why are the two equally good or equally bad? Can they be equally bad? Yeah. Yeah. So tell me, why should we believe that boys and girls can do the same thing, are equally good? Why? Because otherwise society will not progress. Yeah, because it won't be fair. I want proof. What do you mean proof? We just watched They're- a movie about the proof. They're just different genders. You're not a mathematician, right? But they are here what I हाँ, said. बोलो. We just watched a movie. Why should it matter what gender they are? I'm asking you. Why? No, I'm asking you. You have to answer that question. Anyone who can answer that question. Answer why? Why that's the true or No, I'm asking. देखो, इसने तो ये कहा ना कि दोनों बराबर के हैं. मैं पूछ रहा हूँ कि इसके हक में कोई सबूत दो. Give me proof for that. So number one proof, the movie we just watched, it showed that even women can be like physicists, chemists, वगैरह, just like how men are. Okay, that's a very good reason. But you know, I can counter that. I'll say एक मैरी क्यूरी थी तो 10 दूसरे मर्द थे. I can So maybe there's more male scientists, but there's going to be more female in some other field where there's less men. But that's not make them equal then, nah? They're still not equal. No, but then there's going to be like, in some fields women are better, in some that fields just men means are that- better. then that So just it means like they're better equals in some out. sense and better in their sense. They're not equal in that case. They're about equal, nah. About equal, they're not equal. That's the argument. You just proved his point. Both of us are women and men are. Yes, that's how we say it in the grown-up version. No, are both human beings, but they don't have to fight against each other. Whoever
We'll always do a friendly competition. I love to do friendly Acha. competitions. Whoever's, you don't need to show who's the best. Both of us are the best. Thank you. Well, that's nice. तुमने अच्छा कहा, लेकिन फिर भी देखो. The mic is on your jacket. The mic is on my jacket. All right. Thank you, sir. Thank you. अच्छा देखो, मेरा सवाल ये है. दुनिया में देखो तो engineers, physicists, mathematicians, 90% तो मर्द हैं. 10% औरतें हैं. तो फिर ये बात कैसे सही हो सकती है कि सारे बराबर हैं? उनमें फ़र्क क्यों है? Why are 10% women scientists and engineers and doctors and so forth, and 90% are? Yes. Because they're not given a chance. Beautiful. So tell us more. Chance के बारे में क्या? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने कहा कि they're not given an equal chance. Explain why. Explain why, basically. Alright. हाँ, चलो. So the reason being in that most third world countries, for example India and Pakistan, women are expected to stay at home, help with chores or help with children. So in that sense, they're not really given time to explore the world. That's why. हाँ, okay. Yeah, उधर. Sir, another reason boys are better than girls because women depend on men because they are broke. They can't defend themselves. They can't defend themselves. क्या मतलब हुआ? And men have more jobs. They depend on men because most employers choose men over women. Yes, that's Even AI actually. most Even AI employers choose recently. men over women. अच्छा. Any other comments on this? लड़कियों को तालीम की भी सही बाद जगहों पे सहूलियात नहीं होती. उन्हें यही होता है कि घर के काम करें, नॉट टू इतने तालीम हासिल करके क्या करना है. बाज़ लोग सोचते हैं कि लड़कियां अगर ज़्यादा तालीम हासिल करेंगी तो शायद वो बिगड़ जाए. Wow, that's really perceptive. बहुत ज़बरदस्त. हाँ कि औरत को तालीम मिलेगी तो बिगड़ जाएगी. फिर वो शौहर की बात नहीं मानेगी. हाँ, तो शौहर की बात माननी चाहिए. अच्छा, कौन vote needed. How many people say कि शौहर की बात माननी चाहिए? Marriage should not exist in the first place. How many people say बीवी की बात माननी चाहिए? अच्छा. मेरे ख्याल से दोनों को एक दूसरे की बात You want to say something? हाँ, अच्छा. Women are the one who raise men. अच्छा, देखो इसने ये कहा women are the ones who raise men. हाँ? अब अभी देता हूँ. Before you forget. Hello, little. हाँ. Does anyone remember the emperor penguins? Yes. उधर क्या होता है? Mother goes out, father कहते हैं raises a child. बिल्कुल सही. Who feeds the baby? Mother. Mother and father. Mother and father
Yes. I thought mother goes out to get fish and then feeds the baby. So, for the emperor penguin, the mother goes out, fishes, eats so much fish that she can't digest it, comes back and goes, "Ugh," and then the bird eats it, the baby eats it. And the father also feeds the baby. अच्छा, अब तुम क्या कहना चाह रही? I wanted to say हाँ, nothing. okay. हम मिलकर रहने चाहिए. क्या? हम मिलकर रहना चाहिए. हमें मिलकर रहना चाहिए. क्या कह रहे? हमें मिलके रहना चाहिए. मिल के रहना चाहिए. अच्छा, okay. Sir, mainly women look for the house and for men, which doesn't require much education. So they just choose not to go to education because that requires. The boys are just being biased right now. Everyone has a bias. It is bias. It is bias. So instead of the wife listening to the husband and the husband just listening to the wife, why don't they just listen to each other? That's Just a be neutral beautiful now. idea. Instead of one being for the other and the other being for one, just do both. तो देखो इल्हान जो है ना, जब आता है और वो जब कभी इसमें हिस्सा लेता है तो वो ठीक बात कर जाता है. वो कहता है कि दोनों की बातें सुनो और जिसकी बात सही हो वो होना चाहिए. तो ये नहीं कि मियाँ की बात ठीक है या बीवी की बात ठीक है. जिसकी बात ठीक है उसको हम सपोर्ट करेंगे. अच्छा, वो बड़े शोर को अपनी बीवी की बात माननी चाहिए. जोन सी बीवी अपने पैसे कमाती हो, मतलब कि अपनी जॉब करते हो. पैसे तो शोर कमाता है, तो इसलिए बीवी को शोर की बात माननी चाहिए, ना कि शोर को बीवी की बात माननी चाहिए. अच्छा देखो जो हाँ नहीं एक मिनट. हाँ ठीक है, बोलो. Multiple mothers work in offices, in universities. सारे तो नहीं काम करते. And not always men work. Why are you so biased? It's like 70-30 ratio. हाँ. Yes. हाँ बोलो. बात सुनो, तुम कह रहे थे ना कि विमेंस मेंस पे डिपेंड करती है. हमारी सोसाइटी इस तरह से बन चुकी है कि विमेंस को मेंस पे हमेशा डिपेंड करना ही होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से ये बताया जाता है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, घर के काम करो, तुम्हारी शादी होगी एंड यू हैव टू, तुम्हें अपने शोहर की सारी बात माननी चाहिए. पहले वो अपने फादर, चलो पेरेंट्स की बात मानती है, उसमें चलो वो माँ की बात भी मानती है, उसमें चलो छोड़ते हैं. लेकिन उससे हमेशा से यही बताया जाता है कि तुम्हारी शादी होनी है और तुमने शोहर की हर बात माननी है. सो उनका जब माइंड सेट ही इसी तरह होता है तो वो क्यों नहीं मानेंगी. सो अगर आप उनको इस तरह से ना सिखाएं तो वो कभी भी मैन पे डिपेंड नहीं करेंगी. हाँ. नहीं, मगर फिर प्रॉब्लम आ जाता है ना. तुमने कहा ये पाकिस्तान में होता है, इसके अलावा जो हाँ तुमने नहीं कहा था, मगर जो तुमने एग्जांपल दिया था, इट्स मोस्टली बिलोंग्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. फॉर एग्जांपल नो, पाकिस्तान में होता है ये ज़्यादातर. दैट्स व्हाट यू मीन ना. जो अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोप, अमेरिका, उसमें कम होता है. वहाँ पे ये क्यों नहीं है? वहाँ पे फिर भी हाँ, तो फिर वहाँ पे ये रेशियो फिर भी बायस क्यों है? उन्होंने बताया भी था कि 90% वहाँ पे 90% साइंटिस्ट मेल हैं, 10% फीमेल हैं. फिर ये इस वक्त क्यों है? अभी भी ये क्यों? अच्छा ये there is a good point over here. I'll just अच्छा ये सवाल मैंने उठाया था ना कि 90% साइंटिस्ट क्यों हैं मर्द और 10%, तो ये पहले होता था लेकिन अब ये बदलता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है. इनफैक्ट यू विल सी द हेड ऑफ नासा इज अ वुमन. अब आप ये देख रहे हैं कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसमें बहुत सी औरतें हैं
And so now it is no longer true that women are just on the margins. Okay, now yeah. बोलो There is another reason. नजदीक रखो There is another reason why नजदीक रखो यार उसको women can't go by themselves. It is very rare to see a single woman in public. Like they are always traveling with a friend or somebody else, or in a car. They are never by themselves. Will the next years be AI? So what तो why is that? Why? Because they're not allowed to. हाँ लेकिन ऐसे तो आम है बाहर की दुनिया में. अरे तुम इंडिया भी जाओ तो इंडिया में भी औरतें अलग ट्रैवल करती हैं, खुद से करती हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता. बांग्लादेश में भी ऐसे ही होता है. पाकिस्तान में मुसीबत पड़ी हुई है. इसकी बात सही है कि लड़कियों को ये कहा जाता है कि अपने शोहर की बात माननी है, लेकिन हमारे माशरे में यही कहा जाता है. माशरे में दीन में इस्लाम दीन में यही कहा जाता है कि शोहर की बात माननी चाहिए. कहा जाता है सर, कहा जाता है. लेकिन देखो यही तो वजह है कि हम पीछे रह गए. यही तो वजह. बाहर की दुनिया में मर्द औरत बराबर हैं, और जहां बराबरी होगी उधर वो मुआशरा तरक्की करेगा. Don't speak out of turn. When you want to speak, get a mic. It's the same in the US too, and probably European countries too. It's the same in the US, that women don't work that often, men do. Oh, they work just as much. They work just as much. Almost just as much. Yeah. Okay, so I think we are done. Tomorrow we will talk about Einstein and Abdus Salam. Okay? So I'll see you tomorrow then. It means thank you, sir. Thank you, boys. Thank you.